Hi guys, welcome back to my YouTube channel. In today's video, we are going to understand, the Taylor's formula, which is जब आप polynomial approximation करते हो, so we only get an approximate value. So what if we want to get the exact value of a particular function around a boundary? अगर उस तरीके का हमें expression चाहिए, so we will understand that how we can get that. So today's video will be devoted to understanding the Taylor's formula. So without further ado, let's get started. All right, so let's get started and let's start understanding the Taylor's formula. Okay, so what is the formula saying? So we want to understand what is Taylor's formula. सो टेलर्स फॉर्मूला समझने से पहले हमें इस चीज के पीछे की रीजनिंग समझने की जरूरत है कि व्हाट इज दिस टॉकिंग अबाउट. सो इफ यू रिमेंबर, we did polynomial approximation in one of our previous videos. So if you have not watched that video, you know uh, you will not be able to understand this particular topic if you don't understand that. So I'll link the video in the description below. So if you've not watched that, kindly do, because it's an extension of that particular topic. Okay. So, okay. So now that we know, like, this is an extension of polynomial approximation. So पहले ये देखते हैं कि कोई भी अगर मेरे को एक फंक्शन दिया हुआ है, उसको अप्रोक्सीमेट जब मुझे करना था यूजिंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन, देन व्हाट वी यूज्ड टू डू. सो जस्ट टू गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ रीकैप. सो whenever I had to do polynomial approximation, सो पॉलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन में हम लोग क्या करते थे कि हमारे पास जो है ना एक फंक्शन होता था. वी यूज टू हैव अ फंक्शन, और हम चाहते थे कि कोई एक पॉइंट है, उसके आसपास ये जो फंक्शन है उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी, वो अगर मुझे किसी पॉलिनोमियल का यूज करके एक्सप्रेस करना है तो हम लोग कैसे करेंगे. सो वी डिड ऑल दैट एंड वी केम टू से दैट अगर आपको nth ऑर्डर पॉलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन करना है, so if you have to approximate this particular function, so फंक्शन बड़े कॉम्प्लिकेटेड से होते हैं, तो आपको इस फंक्शन की एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर निकालनी है किसी एक पॉइंट के आसपास, ठीक है, मान लो एक पॉइंट है ए. अब आपको पता है कि फंक्शन की वैल्यू ए पॉइंट पे क्या है, तो आप चाहते हो कि ये जो ए पॉइंट है इसके आसपास, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग व्हाट इज द फंक्शन वैल्यू, ठीक है. समटाइम्स फंक्शन can be hard to deal with. Sometimes they give you complicated answers. So what if you don't want to do that, or you might have some other rationale for doing the approximation. So what if a point के आसपास अपने फंक्शन को आप approximate करना चाहते हो using a polynomial. तब हम लोग क्या करते थे. So अगर आपको polynomial of nth order, so हम क्या करते थे, linear approximation, quadratic approximation, cubic approximation, या कोई भी nth degree polynomial approximation आपको करना है, तो वो हम लोग कैसे करते थे. So we had to do nth order polynomial approximation of your function f around a point a. So about x equals to a. अगर हमें polynomial approximation करना होता था तो हम लोग क्या बोलते थे कि ओके, यू हैव अ फंक्शन fx, ठीक है, जिसकी approximate value एक polynomial के बराबर होनी चाहिए, और ये जो polynomial है, this is nth order polynomial. Okay. So if it is nth order polynomial, nth order polynomial का मतलब है कि इसकी जो ये जो polynomial है इसकी हाईएस्ट डिग्री होगी पावर n, ठीक है. अगर उस तरीके से अप्रोक्सीमेट करना है तो वी यूज टू हैव दिस एक्सप्रेशन कि जो हमारा पॉलिनोमियल है वो क्या होगा, जो भी आपका पॉइंट है जिसके अराउंड आप वैल्यू निकालना चाहते हो, आप क्या करो, फंक्शन वैल्यू निकालो प्लस f प्राइम a divided by 1 factorial and then do x minus a, ठीक है. then do f double prime a x minus a raised to the power 2 divided by 2 factorial, ठीक है, ऐसे करो. and then ये keep doing it, और आपको चाहिए nth order का polynomial, then you stop when you do nth differentiation of your function at
value a and then do n factorial and then do x minus a raised to the power n. So guys, if you're not able to understand this, kindly, I would suggest that, you visit that video because we've talked about it in detail. ठीक है? सो ऑल राइट, सो ये हमारा nth ऑर्डर जो है पॉलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन था कि ये जो फंक्शन है इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू मैं इस फंक्शन का यूज करके निकाल सकती हूँ अराउंड पॉइंट ए. ठीक है, सो अब हम लोग ये अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं. ठीक है, सो मान लो आपकी फंक्शन की वैल्यू है एट x इक्वल्स टू a1, तो आप जानना चाहते हो कि 1 सो जो ओके, सो लेट्स से x इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू 0 है. 0 के आसपास आपका फंक्शन क्या अप्रोक्सीमेटली वैल्यू लेता है अगर आपको निकालना है, तो आप इस एक्सप्रेशन का यूज करो एंड यू कैन फिगर इट आउट. ठीक है, बट देयर इज वन प्रॉब्लम हियर. व्हाट इज दैट प्रॉब्लम? दैट प्रॉब्लम इज कि ये जो पॉलिनोमियल है ये आपको सिर्फ एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है. ठीक है, नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू, एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू. ठीक है, सो अब हमारा आइडिया ये है कि हम ये जानना चाहते हैं कि जो मेरी ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है और ये आपकी एग्जैक्ट वैल्यू है. ठीक है, सो मान लो x इक्वल्स टू 0 के आसपास के बारे में हम बात कर रहे थे. ठीक है, सो मान लो आपको चाहिए कि फंक्शन की वैल्यू 0.1 पे क्या होगी. इसको अगर आपको अप्रोक्सीमेट करना है तो हम क्या कर रहे हैं कि आप पॉलिनोमियल में 0.1 पुट करके अपनी जो भी अप्रोप्रिएट वैल्यू है वो निकालो. बट ये वैल्यू एग्जैक्ट है और ये अप्रोक्सीमेट है. ठीक है, तो हम चाहते हैं कि व्हाट शुड हैपन, सो हम चाहते हैं कि ये जो एग्जैक्ट वैल्यू है और ये जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है. लाइक आपने कितनी गलती की है इस फंक्शन वैल्यू को अप्रोक्सीमेट करने में. ठीक है, सो मान लो इसकी वैल्यू है 0.01 और आपका आंसर आया 0.099. तो जो एग्जैक्ट वैल्यू थी और जो आपकी वैल्यू आ रही है उनके बीच में थोड़ा डिफरेंस है. ठीक है, सो आपका गोल है ये जानना कि ये जो डिफरेंस है, ठीक है, ये एरर जो आपने किया है अप्रोक्सीमेट करने में वो कितना है. दैट एरर इज डिटरमिन्ड यूजिंग टेलर्स फॉर्मूला या फिर टेलर्स थ्योरम का यूज करके आप वो जो डिफरेंस है, जो एरर आपने किया है फंक्शन को अप्रोक्सीमेट करने में, उसके लिए एक अपर बाउंड निकाल सकते हो. ठीक है, एक बाउंड्री आपको देता है, एक मैक्सिमम नंबर बता देता है कि भाई आपने मैक्सिमम इतना एरर किया है to determine this exact value using this approximation. ठीक है, that is the idea behind this entire discussion. ठीक है, so you want to know कि आपने how much is the error that you have is in this approximation. ठीक है जी, तो आपका जो एरर है अप्रोक्सीमेट करने में वो कितना है, दैट इज द क्वेश्चन दैट वी आर डीलिंग विद राइट नाउ. ठीक है, सो हियर is where Taylor's formula comes to rescue. Taylor's formula will tell you कि आपने कितना एरर किया है ये फंक्शन को एस्टिमेट करने के लिए. ठीक है, दैट इज द आइडिया. अब ये जो टेलर्स फॉर्मूला है ये हम लोग यूजुअली डेराइव करते हैं यूजिंग द मीन वैल्यू थ्योरम, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था. मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम जो है that kinds of helps us in deriving this. ठीक है, we will not get into the detail of the proof here. If you guys are interested, let me know in the comments. I would love to do the proof, but yeah, like that's the thing. So Taylor's formula आप derive करते हो using the mean value theorem. ठीक है, so without getting too much into the technicality or the proof, let's understand what this Taylor's formula is telling you. ठीक है, तो देखो जी, हम जो है अब आप देखो कि ये जो हमारा फंक्शन है, ये जो पॉलिनोमियल आपने अप्रोक्सीमेशन किया है, आप x इक्वल्स टू a के अराउंड अपने फंक्शन को एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहे हो. तो जब आप फंक्शन की वैल्यू एफ ए निकालोगे, ठीक है, और ये पॉलिनोमियल की वैल्यू एट a निकालोगे, सो व्हेन यू फाइंड पी ए, व्हाट डू यू सी कि एवरीवेयर यू पुट ए, सो ये सारे टर्म्स गायब हो जाते हैं एंड यू आर लेफ्ट विद एफ ए. सो जब x की वैल्यू a होती है तब तो आपका पॉलिनोमियल और आपका फंक्शन
एग्जैक्ट वैल्यूज लेते हैं, ठीक है। सो एक्सेप्ट फॉर दैट पर्टिकुलर पॉइंट, आप कहीं पे भी अगर ये पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालोगे और ये फंक्शन की वैल्यू निकालोगे, बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू बी डिफरेंट, ठीक है, बिकॉज यू आर डूइंग दिस अप्रोक्सीमेशन अराउंड पॉइंट ए। तो एटलीस्ट एक पॉइंट पे तो आप चाहोगे कि ठीक है, जो आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है और जो आपका एक्चुअल फंक्शन है वो सेम वैल्यू वो सेम वैल्यू दे, ठीक है। सो एक्सेप्ट एट x इक्वल्स टू a, x इक्वल्स टू a को छोड़ के बाकी हर जगह जो आपका फंक्शन वैल्यू ले रहा है एंड जो भी आपका पॉलिनोमियल, जो भी डिग्री का आपने चूज किया है, वॉट एवर लेवल ऑफ अप्रोक्सीमेशन यू डन, बोथ ऑफ देम विल हैव अ डिफरेंट वैल्यू, ठीक है, दे विल बी डिफरेंट। तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो भी डिफरेंस होता है आपकी एक्चुअल वैल्यू और आपकी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू के बीच में, उसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक है। रिमाइंडर मीनिंग जो भी बच गया, ठीक है, तो जो भी आप एस्टिमेट कर पाए, ठीक है, और जो भी बच गया, दैट इज बेसिकली योर रिमाइंडर, ठीक है। सो इफ यू डू द डिफरेंस बिटवीन योर फंक्शन एंड द पॉलिनोमियल दैट यू यूज टू अप्रोक्सीमेट, उसको हम लोग बोल रहे हैं रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर, ठीक है। अगर ये आपका पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n तक आपने अप्रोक्सीमेट किया है, दिस इज योर nth ऑर्डर पॉलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन, तो जो सिंबल है जो हम रिमाइंडर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं, दैट इज नथिंग बट r ऑफ n प्लस 1 x। सो ये एक्चुअली सिंबल है विच टेल्स यू कि भाई मेरा पॉलिनोमियल जो nth डिग्री तक अप्रोक्सीमेट हुआ है, उसके लिए जो रिमाइंडर वैल्यू है उसको हम लोग nth डिग्री एंड दिस इज n प्लस 1। सो इफ दिस इज n डिग्री, दिस इज n प्लस 1, ये सिंबल है, ठीक है। सो जब आपने x वैल्यू पे अप्रोक्सीमेशन किया तो x वैल्यू पे रिमाइंडर कितना आया, दैट इज द सिंबल दैट वी यूज, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन योर फंक्शन वैल्यू माइनस योर अप्रोक्सीमेट पॉलिनोमियल जो भी आप यूज कर रहे हो, ठीक है, एंड दिस इज योर nth डिग्री polynomial that you use for approximation, ठीक है जी। so this is your nth order polynomial, this is your remainder and this is your actual function, ठीक है। तो if I see, so using this entire expression I can say कि मेरी जो actual value है वो किसके बराबर होनी चाहिए, whatever is my approximate value, and if I add my remainder to it I should get the exact value, ठीक है। so whatever is my approximated value plus whatever is my remainder, that should give me my exact value, ठीक है। इस तरीके से अभी तो हम लोग सिर्फ नोटेशंस के साथ खेल रहे हैं, ठीक है। अब जो है टेलर्स थ्योरम जो है वो एग्जैक्टली बोलती क्या है वो हम अभी समझते हैं। सो अभी तक हम लोग कॉन्टेक्स्ट सेट कर रहे थे, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट टेलर्स थ्योरम इज सेइंग, ठीक है। सो इसको बहुत ही डिटेल में बारीकी से समझेंगे क्योंकि थोड़े थोड़े माइन्यूट चीजें हैं विच आर कंफ्यूजिंग समटाइम्स। सो लेट्स अंडरस्टैंड। सो सबसे पहले मान लेते हैं कि सपोज यू हैव अ फंक्शन f जिसको भी आप अप्रोक्सीमेट करने की कोशिश कर रहे हो, दिस फंक्शन इज n प्लस 1 टाइम्स डिफरेंशिएबल। ये फंक्शन जो है n प्लस 1 टाइम्स डिफरेंशिएबल है, ठीक है, कि मतलब n प्लस 1 टाइम्स आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हो। सो f प्राइम x, f डबल प्राइम, f ट्रिपल प्राइम, f प्राइम n, f n प्लस 1 टाइम्स आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। सपोज यू हैव अ फंक्शन लाइक दैट, ठीक है। एंड ये जो डिफरेंशिएशन है ये किस इंटरवल में पॉसिबल है, इन एन इंटरवल इंक्लूडिंग a जिसके अराउंड आप अप्रोक्सीमेट कर रहे हो एंड x जहां पे भी आप वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। सो मान लेते हैं कि आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है इन एन इंटरवल इंक्लूडिंग a एंड x, ठीक है। सो a और x को इंक्लूड करने वाली जो इंटरवल है उसके अंदर आपका फंक्शन n प्लस 1 टाइम्स डिफरेंशिएबल है। सो इफ दैट इज द केस देन ये जो रिमाइंडर है
then this remainder r of n plus 1 x can be written as, इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो? It can be written as nothing but r of n plus 1 x. This is equals to what? 1 over n plus 1 factorial. This function getting differentiated n plus 1 times. और ये जो भी आपने n plus 1 टाइम अपने फंक्शन को डिफरेंशिएट किया है, इसकी आप वैल्यू कहाँ पे निकालोगे? एट सम पॉइंट c. ठीक है, एट सम पॉइंट c. एंड this will be nothing but x raised to the power x minus a raised to the power n plus 1. ठीक है, सो ये जो रिमाइंडर है इसकी वैल्यू क्या होने वाली है? आप क्या करो, n plus 1 फैक्टोरियल से डिवाइड करो, फंक्शन को n plus 1 टाइम्स डिफरेंशिएट करो, उसकी वैल्यू निकालो एक पॉइंट c पे. वो पॉइंट c एग्जैक्ट नहीं है, वो क्या पॉइंट है वो देखते हैं. ठीक है, एंड देन मल्टीप्लाइड बाय x माइनस a रेज टू द पावर n plus 1. ठीक है, एंड फॉर सम नंबर, और ये जो c है उसकी प्रॉपर्टी क्या है? फॉर सम नंबर. सो ये जो नंबर है c, ये किस नंबर, लाइक ये जो नंबर है c, दिस इज बिटवीन a and x. So I know it's a very very technical result. So एक बारी फिर से समझते हैं. ठीक है, सो हमने समझा कि हम अप्रोक्सीमेट कर रहे थे एक फंक्शन को, और जो मेरी एग्जैक्ट वैल्यू है और जो फंक्शन वैल्यू है, सॉरी जो एग्जैक्ट वैल्यू है और जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू, उसके बीच में जितना भी डिफरेंस है उसको हम लोग रिमाइंडर बोल रहे हैं. तो ये क्या कह रहे हैं कि अगर आपके पास एक फंक्शन है जिसको आप n plus 1 टाइम्स डिफरेंशिएट कर सकते हो, ठीक है, और आपने ये जो भी अपना फंक्शन है ये पॉइंट a के अराउंड अप्रोक्सीमेट कर रहे हो, ठीक है, तो ये जो a से x के बीच का जो इंटरवल है, मान लेते हैं कि आपका फंक्शन उस इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, तो ये जो रिमाइंडर है, दिस रिमाइंडर कैन बी रिटन लाइक दिस, कि यू डू n plus 1 factorial, you differentiate it n plus 1 times, and you find this differentiation at a point c which is somewhere between your values a and x. a और x के इंटरवल के बीच में लाई करता है, and then you multiply by x minus 1 a raised to the power n plus 1. काइंडली नोट कि यू सी ये जो रिमाइंडर है ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिजेंबल कर रहा है किस चीज से? यू सी, I will just try to write the nth order polynomial approximation. मैं एक बारी लिखती हूँ and then we'll try to see ये किस तरीके से resemble कर रहा है. ठीक है, so ये जो मेरा polynomial approximation है, जब आप polynomial approximation करते थे तो वो क्या होता था? It used to be, अगर मैं a पॉइंट के अराउंड अप्रोक्सीमेट कर रही हूँ, so it used to be f of a plus f prime a x minus a divided by 1 factorial plus f double prime a divided by 2 factorial x minus a raised to the power 2. That's what I used to do. Plus ऐसे आप चलते जा रहे हो and you are writing it till, अगर nth ऑर्डर है तो क्या करते थे? f raised to the power n a, actually it's not raised to the power, it's differentiating function f n times, finding the value at a, and then you used to divide it by n factorial and used to do x minus a raised to the power n. तो ये क्या होता था? मेरा पॉलिनोमियल वैल्यू. दिस यूज्ड टू बी माय अप्रोक्सीमेट वैल्यू. ठीक है, तो हम क्या बोलते थे कि आपकी फंक्शन वैल्यू जो है वो अप्रोक्सीमेटली ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है उसके बराबर होती थी. ठीक है, सो नाउ दिस टेलर्स थ्योरम इज सेइंग कि आपको अगर ये पॉलिनोमियल में रिमाइंडर अगर आप एक ऐड कर दोगे तो वो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू के बराबर आ जाएगा. एंड जो रिमाइंडर आपको ऐड करना है दैट इज ऑफ दिस फॉर्मेट. It is of this format. So you see, it is resembling all these terms. कि यहाँ पे divided by n factorial है, यहाँ पे n plus 1 factorial है, यहाँ differentiated n times, यहाँ पे differentiated n plus 1 times, यहाँ पे raised to the power n plus 1, यहाँ पे raised to the power n. So it's like the next term. अगर मैं n plus 1 times
पॉलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन करती तो मेरे पास ये एग्जैक्ट टर्म आ जाता, एक्सेप्ट यहाँ पे मैं ए लिखती, ठीक है। बट सिर्फ डिफरेंस क्या आया है रिमाइंडर में कि यू आर नॉट पुटिंग ए हियर, यू आर जस्ट पुटिंग अ नंबर सी हियर विच इज समवेयर बिटवीन ए एंड एक्स, सो दैट इज योर रिमाइंडर, ठीक है। सो अगर आपको अपना फंक्शन अब एग्जैक्ट तरीके से लिखना है, if you want to write your exact function, then what you will be writing, that fx is nothing but this entire polynomial that I've written. So okay, I'll not do that. So let me just write this is your entire polynomial. ये पूरा का पूरा आपका polynomial है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, plus this remainder, and this remainder is nothing but 1 over n plus 1 factorial f differentiated n plus 1 times you figuring out the value at a point C and doing x minus a raised to the power n plus 1. The only thing that you have to be careful is ये जो number है C, this is between a जहाँ पे आप जिसके अराउंड अप्रोक्सीमेट कर रहे थे and your value x, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली योर टेलर्स थ्योरम, जो एक तरीके से आपके पॉलिनोमियल फंक्शन और आपके जो एग्जैक्ट फंक्शन है, सो एग्जैक्ट फंक्शन एंड अप्रोक्सीमेट फंक्शन, what should be added to the approximation so that you get an exact function, ये एक तरीके से आपको आंसर करती है, ठीक है। It seems a little abstract, I understand, but it is what it is. So let's understand this, ठीक है। So अब एक तरीके से ये मुझे किस चीज में हेल्प करती है कि पहले मैं सिर्फ पॉलिनोमियल अप्रोक्सीमेट करके एक वैल्यू निकाल देती थी, ये मेरी एग्जैक्ट वैल्यू होती थी। What if sometimes it's not possible for me to find the exact value, तो मेरे पास एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती थी। और अब जो है this theorem has enabled me to understand कि मेरा एरर जो है वो कितना हो सकता है, कि एरर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कि अगर मेरी एग्जैक्ट वैल्यू मेरी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू 1 है और मेरा एरर भी 1 के आसपास ही है, सो दैट मीन्स टू मच एरर, and if my error is turning out to be something like 0.001, so that is something maybe that I can live with. So ये actually मुझे बता देता है कि आपका approximation में error कितना है, ठीक है। So that is where it tries to tell us कि what is the magnitude of error. तो एक तरीके से आप अपर बाउंड मतलब कि मैक्सिमम एरर कितना आप कर रहे हो while approximating, that is what you get to know using this particular idea, ठीक है। So this is what this theorem is saying, ठीक है। All right, so इसको एक एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं, ठीक है। So let's use an example. So मान लो कि so it helps us in understanding the upper limit in the error that I'm making. Upper limit of the possible error. So upper limit of the possible error that you make while approximating, ठीक है। So let's see. So मान लो कि आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, और आप अराउंड 0 उसको अप्रोक्सीमेट करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। सो योर ए वैल्यू इज 0, ठीक है। सो मान लो आप क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन करते हो, ठीक है। सो जो भी आपका पॉलिनोमियल है, इट शुड लुक समथिंग लाइक व्हाट, एफ ऑफ 0 प्लस एफ प्राइम 0 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल इनटू एक्स plus f double prime 0 divided by 2 factorial x square. So अगर आपको क्वाड्रेटिक अप्रोक्सीमेशन करना है अराउंड 0.0, तो ये आपकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाती है, राइट। बट अगर आपको ये बताना है कि भाई चलो ठीक है कि आपका एरर कितना पॉसिबल है while doing this approximation, so then you will say that the error should be, so you will just add the remainder value. अब remainder value क्या होगी, f triple prime c divided by 3 factorial
x रेज टू द पावर c, ठीक है। और ये जो c वैल्यू है इट इज बिटवीन 0 एंड x। तो c वैल्यू इट वेरीज, जैसे जैसे आपका डिग्री ऑफ अप्रोक्सीमेशन चेंज होता है ये c वैल्यू वेरी करती रहती है, ठीक है। बट एक तरीके से ये एक नंबर आ जाएगा जिससे आप ये बता सकते हो कि ओके दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ माई एरर दैट आई एम मेकिंग वाइल अप्रोक्सीमेटिंग, ठीक है। सो दैट इज वेयर इट हेल्प्स, ठीक है। सो दिस इज योर पॉसिबल एरर दैट यू माइट बी मेकिंग, ठीक है। सो अब एक कॉन्क्रीट एग्जाम्पल लेते हैं जिसकी वजह से हमें समझ में आएगा कि लाइक how how are we finding an upper bound on the error that you're making, ठीक है। So let's take an example. So let's say you have your n value to be 2, ठीक है। आप quadratic approximation कर रहे हो एंड आपका जो फंक्शन है दैट इज नथिंग बट 1/1 plus x, ठीक है। ऑल राइट, दिस इज योर फंक्शन। इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है आपको। लाइक इसके ये फंक्शन है आपका, इसके लिए आप पॉलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन कर रहे थे एंड यू वांट टू अप्रोक्सीमेट दिस फंक्शन अराउंड ए वैल्यू 0, ठीक है। 0 के अराउंड आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखना चाहते हो एंड सो दे आर सेइंग कि आप प्लीज फाइंड करो द टेलर्स फॉर्मूला around, so Taylor's formula at a equals to 0. That is the first thing that they are asking. And the second thing they are asking is कि अगर आपकी x value, the mod of your x value is less than or equal to 0.1, ठीक है। so ये क्या कह रहे हैं कि आपकी x value जो है वो -0.1 से लेके 0.1 के बीच में ही अगर लाई कर रही है तो आप मैक्सिमम कितना एरर करते हो while doing this approximation, ठीक है। so find the upper bound on the remainder. Remainder is nothing but your error. So they're asking like, what is the maximum amount of error that you can make while doing this approximation? Okay. That is the question. I hope the question makes sense. Everybody is fine with the question. Okay. So this is the function. They say you have to do quadratic approximation around a equals to 0. So find the Taylor's formula around this. So Taylor's formula is this formula. Like this is your Taylor's formula. अगर आप ये p value भी यहाँ पे put कर देते हो, that is your Taylor's formula. ठीक है। And so once you do that, you also have to explain them कि अगर आपकी x वैल्यू इसी वैल्यूज के अंदर रहती है तो आपका जो एरर है उस पे अपर बाउंड जो है वो कितना है, ठीक है। दैट इज द क्वेश्चन। सो लेट्स ट्राई एंड डू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। All right, so we understand the question now. So let's try and solve this question. Okay. So हमें पता है कि हमारा जो फंक्शन है that function is this. So my function is fx over 1/1 plus x, right? Or you can say 1 plus x raised to the power -1. ठीक है। So that is my function. I have to do a polynomial approximation of degree 2, ठीक है। So degree 2 approximation करना है और जब मुझे remainder निकालना होगा so मुझे degree 3 पे भी differentiate करना पड़ेगा, right? Because just remember this. So degree 2 tak I have to do this and then like this will become my third degree. Okay. So I have to find fa, f prime a, f double prime a, f triple prime a. ठीक है। That is what I want to and need to do. ठीक है। So आप f prime x कैसे निकालोगे? सबसे पहला काम होता है डिफरेंशिएशन निकालना। So f prime x will be nothing but this is the function that I have. So मैं इसको जब डिफरेंशिएट करूंगी so -1 will come in front and then 1 plus x raised to the power -1 and -1 which is -2 and then जो भी अंदर चीज है उसको आप डिफरेंशिएट करोगे with respect to x. So when you differentiate 1 plus x with respect to x, 1 का differentiation 0 and when you differentiate x it becomes dx by dx which is 1. So that's basically all that you need to know. ठीक है। So that is your
f prime x. Now if you want to do f double prime x, what do you get? So now you have to differentiate this with respect to x again. So this is -1. This -2 power will come in front. Okay. So it comes in front, and then you do a power -2 -1. So this becomes 1 plus x raised to the power -3. Okay, that is what it is. And then again, one more time we have to do this. So you do f triple prime x, and it becomes -1 and then -2. And then this comes in front. Okay, so -3. And then this will be 1 plus x raised to the power -4. So these are all the differentiations that you needed to do, right? ये चारों की मुझे need थी, I have done them. ठीक है? I have to, approximate my function around a equals to 0. So मुझे जो the value that I need to find is f of 0, f prime 0, f double prime 0, and then whatever is my triple prime number, that should be calculated at C. So that's what I want. So we'll do that. Okay. And here the numbers A and A and A, all of that, they become 0. Okay. So let's see. So first of all, what is F0? F0. You need F0. So F0 kya hone wala? You just put 0 here, you get 1. Okay. What is F prime 0? What do you get? You put a 0 here. 1 raised to the power anything is 1. So this becomes -1, right? You do again a power 0, like a number 0. So then this is 1 only, and this is what? -1 into -2. What is that? 2, right? So f double prime 0 is 2. And then f triple prime, I have to figure out. Okay, I have to figure out f triple prime. And I don't have to figure it out at 0 because मुझे second degree approximation karna tha. I needed to do second degree approximation. So whatever my remainder is going to be, that will have a power 2 plus 1, which is 3. And that needs to be calculated at a point C. This remainder needs to be calculated at a point C. Okay. So that's what we will do. So I have to find f triple prime C. Okay. So f triple prime C will be what? You just put in place of x, just put C. So this is -1, -2. 2 into -3, -6, right? So this is -6, and then 1 plus C raised to the power -4. Okay. So these are all the numbers that you need to be ready with the entire thing. Okay. So ये सारे numbers मुझे चाहिए थे. I have made them ready. Let me just now write what my Taylor's formula should be. Okay. So my Taylor's formula should be fx equals to what? You do f0 plus f prime 0 divided by 1 factorial multiplied by what? X minus a, right? A here is 0. Okay. So this is x plus f double prime 0 divided by 2 factorial. X minus a square. A is 0 here. So this is x square. Okay. And then comes the term for my remainder. Then comes the term for my remainder. And what should be my remainder? F triple prime C divided by 3 factorial, right? And then it should be multiplied by what? X minus a raised to the power 3. So a here is again 0. So you will just do x power 3. Okay. So kindly compare it. इसको आप एक बारी compare भी कर सकते हो. You can compare it with this, right? Is this exactly what we needed? So we had to do a second degree approximation. This is what we have. ये second degree approximation हो गया. And then we needed a remainder, which is like this. Okay. So we've done everything that we needed to do. So all the structure is ready. Now we just have to put the values. Okay. ये हमें करना है. So now we just need to put the values. So the values are going to be what? F of x equals to. What is f of 0? F of 0 is 1 plus f prime 0 is -1 divided by 1 factorial multiplied by x plus f double prime 0 is 2 divided by 2 factorial into x square. Okay. F triple prime
C is nothing but this. So minus 6, 1 plus C raised to the power 1 plus C raised to the power minus 4 divided by 3 factorial. 3 factorial multiplied by x cube. That is what it should be. Okay, this is what I have. All right. So this is factorial. Factorial meaning आपको ये जो नंबर है इसको मल्टीप्लाई करते रहना है. Starting from 1 you have to multiply it till this number. So 3 factorial is nothing but 3 into 2 into 1. 4 factorial is what? 4 into 3 into 2 into 1. That's what it is. ठीक है. So now we'll just simplify it even more. So your fx is what? 1. This is minus 1 and 1. So this is minus x. 2 factorial is nothing but 2 into 1, which is 2. So this get cancelled. And then I have a x square here. Okay. What is this? This is 3 factorial. What is 3 factorial? 3 into 2 into 1. What is 3 into 2? 6. So this is 6 and 6. So minus 1 is left. So I have a minus 1 here. And then, this is 1 plus c raised to the power minus 4. So I can do it like this. 1 plus c raised to the power 4. And then this is x power 3, right? So this is my Taylor's formula for a equals to 0, like for my function around a equals to 0 and n value equals to 2. This is the Taylor's formula. So this is your approximation, polynomial approximation, and this is your remainder. Okay? So that's what you have to do. If somebody says कि आपको Taylor's formula लिखना है with the appropriate numbers, you do that. So that is the first part of the question. So we did that. Okay? And then they are saying if, the mod value of x, mod value mane only the magnitude, right? So mod of x less than equal to 0.1 का मतलब क्या होता है? X should lie between 0.1 to minus 0.1. ठीक है? These are the values between which your number can take the values, take the appropriate values. Okay. So now you have to find the upper bound on the remainder. So like what could be the maximum value of your remainder? That's what you have to find out. So let's see, let's understand what is the remainder in detail. So this is your remainder, right? So the remainder is 1 plus c raised to the power 4 multiplied by x cube. And there is a negative also here. Okay? They've said mod of x should lie between this number. Okay. And what do we know something about c? Whenever we were talking about c is a number which should lie between what is your a value and then what is your x value. Okay, so it should lie between what? C between 0 and x. Okay, that is what it should be. Okay, so okay, all right, so now let's see like what is the maximum value of your number. So first of all, you want to find an upper limit for this, like maximum value इसकी कितनी हो सकती है, ठीक है? So I need to figure out the upper bound for this. कि this remainder, ये जो remainder है, इसकी सबसे बड़ी value क्या हो सकती है? अगर x की possible value जो है, वो lie करती है between 0.1 to minus 0.1, okay? That is the first thing. And आपका जो नंबर है c वो भी 0 से लेके x के बीच में लाई करेगा. ठीक है? All right. It usually helps if you have a fixed x number. मान लो कोई दे देता हमें कि x की वैल्यू जो है वो 0.1 है. ठीक है? Then what I can say that okay, at least my x value got fixed, and then I have to choose a c between 0 and 0.1. So it becomes a little easier. ठीक है? But now I have a range of numbers. ठीक है? My x value is also varying and my c value will keep varying like this. ठीक है? So you see, if your x values are varying between this, so आप ये देखो कि this particular number ये सबसे बड़ी वैल्यू कब लेगा. ठीक है? This particular number will take the maximum value either on this edge or this edge, right? ठीक है? I'm just talking about the magnitude here, not the sign. ठीक है?
So if you take 0.1 or 0.1 here, then only your function will take a maximum value. सबसे ज़्यादा value बोलेगा. That is the first thing, right? First thing is x either 0.1 or minus 0.1. Your x cube will have max value in terms of magnitude. Okay? ठीक है जी. That is the first thing. And then what is the second thing? If you are looking at a denominator, ठीक है, आपको अपने रिमाइंडर की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, राइट? तो रिमाइंडर में आप क्या चाहोगे कि छोटी वैल्यू हो कि बड़ी वैल्यू हो? सबसे बड़ी वैल्यू तो आपको छोटा रिजल्ट देगी. सो व्हेन आई हैव 1/5 इट्स बिगर देन व्हेन आई हैव 1/, so 1/5 is a smaller number as compared to 1/2. 1/2 is a bigger number. So I want in my denominator it should have a higher value. ठीक है, डिनोमिनेटर में अगर बड़ी वैल्यू, sorry, actually I said the opposite thing. If you have a bigger number in denominator, overall your number will go down. If in the denominator you have a smaller number, overall your number will go up. ठीक है? So you want that this number should be minimum. When is this number minimum? For what value of x? Here we have a preference, like, okay, if you take, x value, if you take x value, you can't take x value 0. So if you take, let's say, x value 0.1, then your c value can be from 0 to 0.1. So सबसे छोटी value फिर c की क्या हो सकती है? 0, right? So 1 raised to the power 4. But we want something which is even lesser, जो मेरे denominator को और छोटा कर दे, ठीक है? So what value of x can make my denominator the smallest? Because मेरा जो c value है वो 0 से x के बीच में lie करेगा, right? So if you look at the positive side में अगर आप जाते जाओगे 0 to 0.1, then what is happening? आपके पास एक बड़ा बड़ा number आता जा रहा है in the denominator. You are getting a bigger number. Overall your number is getting smaller. We don't want that. We want something which will make my denominator smallest. So I need to go on the negative side. अगर मैं negative side पे देखती हूँ, अगर मेरी x की value minus 0.1 होगी, ठीक है, in that case what am I going to get? This will be something 1 minus something. So 1 minus something will lower the denominator. Uski power will also lower the denominator. So that is what I want, right? So if we choose x value to be minus 0.1, then my c value can lie between, minus 0.1 and 0. So I have a number which is making my denominator as small as possible, and that's basically what I want. So मैं कौन सी वैल्यू लूँ x की जिसके लिए मेरा डिनोमिनेटर सबसे बड़ी सबसे छोटी वैल्यू ले ले, ठीक है? So first of all, why am I doing all of this? My c value will not actually be this number, but I have to find a bound कि इससे maximum value हो नहीं सकती, ठीक है? कि एक bound बता दो कि उसके ऊपर आपकी value नहीं जा सकती. When you change c, when even if you take something which is in between, जो value है उसका एक maximum boundary आपने बता दिया है, उससे फिर कम ही values होंगी. So we are just trying to figure out the bounds, the maximum value that is possible. So if I put c to be minus 0.1, that will make my denominator the smallest, and that's basically what I want. Okay, so if I take my x value to be minus 0.1, so here I was indifferent that okay, this is also fine, this is also fine. So now here, by looking at the denominator, I saw that okay, I actually need this number because this will make my denominator the smallest and my entire number the biggest. So using these two ideas, I can see that, okay, I have this. So my remainder is minus 1, x raised to the power 3 divided by 1 plus c raised to the power 4. Okay. So now, putting all these ideas together, I can see कि अगर मैं x की value, minus 0.1 raised to the power 3 करूं, and then I divided by 1 minus 0.1 power 4. So I'm not saying here your actual c value will be minus 0.1. No, that's not what I'm saying. But आप इससे बड़ी value, like this is the value that I'm taking so that this entire number becomes the maximum. So उसके बाद आप जो भी c value लोगे for x value 0.1, your number is going to be smaller than that. And that's what my objective is. Okay. So if you do this, then what do you get? This is minus 1 and this minus 1 raised to the power 3
3 times it is happening, so you'll get a positive number. So this is 0.1 raised to the power 3 divided by this is 0.9 raised to the power 4. So whatever this number is coming out to be, that is your maximum bound. इसके अलावा आप कोई भी x value ले लो, कोई भी appropriate x value के लिए c value ले लो, your number of like the number for the remainder is going to come out to be lesser than this number only, right? So आप इसके अलावा कोई भी number try करो, you know, you are definitely going to get something which will be lesser than this number. So this is like an upper bound for this remainder. Okay. So here we've used two ideas कि मुझे अपने न्यूमरेटर को भी मैक्सिमाइज करना है और अपने डिनोमिनेटर को सबसे छोटा करना है ताकि मेरा नंबर ओवरऑल मैक्सिमाइज हो सके. These are the two ideas that we've combined here to figure out what is my upper bound. ठीक है. So these are the kind of problems that you can get. Guys, let me know if you're able to understand this, because you know it's a little it's basically a concept which needed a little bit of you know, trial and error. So that's something that you have to deal with. So every single question you'll have to, you know, do different things. This was a little tricky. Why? Because you know, they gave you an upper bound, like a boundary of x values. In most cases, what will happen, you will be given a number ki by x ki value hai 0.1. So they'll fix the x value. So when they fix x value, ये जो भी आपका रिमाइंडर है यहाँ पे x वैल्यू फिक्स हो जाती है. सो द ओनली थिंग दैट यू हैव टू थिंक अबाउट व्हाइल फाइंडिंग एन अपर बाउंड इज व्हाट शुड बी योर c वैल्यू, एंड c वैल्यूज लाई बिटवीन 0 and x if x is positive, and you know, x and 0 if x is negative. So appropriately you have to pick a c. Okay, so that is basically you know, how you will be figuring out the upper bound for your remainder. So इससे मुझे क्या पता चल गया कि ये जब मैं अप्रोक्सीमेशन कर रही हूँ तो मेरा मैक्सिमम एरर इतना हो सकता है. If this is the error that I'm fine handling, I'm fine. Otherwise, you know, do something else. कोई और तरीका अपनाओ अपने फंक्शन वैल्यू को अप्रोक्सीमेट करने का, अगर आपको ये अप्रोक्सीमेशन पसंद नहीं आ रहा है तो. ठीक है. So that is basically the idea. Okay, I hope it makes sense. All right. So moving on to, you know, a little bit of an extension of Taylor's formula only. अब ये क्या बोल रहे हैं कि आप अगर टेलर्स फॉर्मूला एक बहुत ही स्पेसिफिक टाइप ऑफ सिचुएशन में अप्लाई करते हो, ठीक है, अ वेरी स्पेसिफिक टाइप ऑफ सिचुएशन which is, you know, let's say your function is of this form 1 plus x raised to the power m. Okay, this power m, it doesn't necessarily have to be, you know, integers. It could be like any real number. M could be 1 by 2 minus 1 by 3, anything, right? So m is any, is an arbitrary real number. Okay, if that is the case, then अगर मैं इस फंक्शन के लिए टेलर्स फॉर्मूला को अप्लाई करूं, then what am I going to get? That is the question at hand. ठीक है. So what is the question? The question is, if somebody gives you this particular function, so you know the function that we had, 1 plus x raised to the power what? This 1 plus x raised to the power minus 1. So this was also a special case of that only, right? M value minus 1 था वहां पे. ठीक है. So if somebody gives you a function like this, then you know, your Taylor's formula take a very specific type of form. ठीक है, बहुत ही specific type of form ले लेता है. ठीक है. I can explain the entire thing, you know, I can try and derive this also, but you know, I'm actually thinking, should I derive it or not? Okay, let's do that. So देखो, अगर आपको यहाँ पे टेलर्स फॉर्मूला अप्लाई करना है तो क्या करना पड़ेगा? यू विल नीड टू, एंड मान लो कि हमें टेलर्स फॉर्मूला अप्लाई करना है अराउंड ए वैल्यू इज 0. ठीक है. सो अराउंड x equals to 0, you have to figure out the Taylor's formula. ठीक है. That is the objective that you have. So we have this particular function. We have to find the Taylor's formula around a equals to 0, or you know, you can say x value close to 0. ठीक है. There's one more thing that you need to be careful about, because you know, you see यहाँ पे m value can be any real number. So मान लो कि m value, you know, 1 by 2 भी हो सकती है, right?
So this is 1 plus x under root. Can you have something which is negative inside the root, right? You can't have anything. So we can't have anything inside the root which is negative. So what x value should we have? Can I have a x value which is, less than -1, like -2? Can I have this value here? No, right? So you will have to, keep a condition that your x value should be greater than -1 to ensure that this particular expression is defined for all m values. Otherwise, it will not be defined. Okay. So that is something that we have to keep in mind. Okay. So we have to apply the Taylor's formula for this particular function where m is any arbitrary real number and your x value should have to be greater than -1. So that is basically the agenda. Okay. So in order to do this, what all do I need? Taylor's formula apply करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए होगा? मैं f प्राइम x निकालूंगी, f डबल प्राइम x निकालूंगी, f ट्रिपल प्राइम, और ऐसे मैं चलती रहूंगी टिल व्हाट पॉइंट, जितना भी मेरे को अप्रोक्सीमेशन करना है, वट एवर डिग्री ऑफ अप्रोक्सीमेशन दैट आई नीड टू डू, एंड देन आई विल जस्ट ऐड अ रिमाइंडर टर्म, राइट? सो वी जस्ट हैव टू डू वट एवर वी डिड लास्ट टाइम, लाइक पिछले केस में जो भी हमने किया है उसी चीज को रेप्लिकेट करना है. दैट्स ऑल दैट वी हैव टू डू. ओके, नथिंग न्यू. So, and we have to do it around x equals to 0 or a equals to 0. So, आपको क्या निकालना है? You will have to find f0, f prime 0, f double prime 0. इस तरीके से आपकी कहानी आगे बढ़ेगी. ठीक है? So, let's do it. So, f prime x इस केस में क्या होने वाला है? You do m and then 1 plus x raised to the power m minus 1. That is the first thing. ठीक है? So when you do that, तो f prime 0 क्या होगा? Because that is what I need, right? F prime 0 will be what? You just put 0 here. So 1 plus 0 raised to the power anything is 1. So you'll have m here. So we'll have m here. ठीक है? How do you do f double prime x? So I'll just differentiate this function. ठीक है? So I'll get what? M into m minus 1 and then 1 plus x raised to the power m minus 2, right? And then I have to find what is this value at 0. So f double prime 0 kya hoga? It will be, this becomes, if you put x equals to 0 here, you'll get 1. So it is m into m minus 1. So m into m minus 1. ऐसे आपकी गाड़ी आगे चलती जाएगी. You'll keep moving and then finally you will have what? f का nth ऑर्डर अगर आपको डिफरेंशियल करना है तो क्या करोगे? जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव था तो यहाँ पे क्या था? 1. सो समथिंग विच इज लेस देन 1, राइट? 1 लेस देन 2, राइट? देखो यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 1 था, तो यहाँ पे n है, तो ये जो डिफरेंस है यहाँ पे क्या होना चाहिए? n minus 1, राइट? दैट्स बेसिकली व्हाट द लॉजिक इज. सो m minus 1. ठीक है, ऐसे चलते जा रहे हैं और फिर m में से हमें क्या माइनस करना है? 1 लेस देन व्हाट इज दिस डिग्री हियर. सो यहाँ पे n है तो n में से एक डिग्री कम कर दो, विच इज n minus 1, वो सब्ट्रैक्ट कर दो. ठीक है, सो यू सब्ट्रैक्ट n minus 1 from here and that's what you will be getting. ठीक है, and then 1 plus x raised to the power n, this is what you will have. ठीक है, so इसको जब आप 0 पुट करोगे यहाँ पे, then what are you going to get? This will get vanished. x 1 plus 0 raised to the power n will be 1 and this is what you will be left with. So you will be left with m into m minus 1. ये multiplication चलता जा रहा है. It will go on till m minus m में से जब आप n minus 1 subtract कर दोगे, it will go on till that point. ठीक है, so that is what you get. Okay, so we have all the things which are necessary to do the Taylor's formula. So polynomial approximation करने के लिए हम लोग ready हो गए हैं. Okay, and then हमें 1 plus x जो है raised to the power m ये लेके आना है. ठीक है, so that is nothing but what do you do? f0. What is your f0? f0 क्या होता है? You put 0 here and you'll get 1. So 1 plus f prime 0. F prime 0 is m. So m divided by 1 factorial into x minus a, which is x minus 0. So this is x. Plus, फिर जो आपका f double prime 0 है वो ले लो. So m into m minus 1.
फिर उसको डिवाइड करो 2 फैक्टोरियल से, एंड x माइनस a स्क्वायर्ड, सो x माइनस 0 स्क्वायर्ड, सो दिस इज x स्क्वायर्ड। ठीक है, ऐसे आपकी स्टोरी आगे बढ़ रही है, एंड इट मूव्स ऑन टिल m इंटू एम माइनस 1 इंटू, ऐसे चल रहा है, m में से n माइनस 1 सब्ट्रैक्ट किया और उसको डिवाइड किया n फैक्टोरियल से, मल्टीप्लाई किया x रेज टू द पावर n से। तो ये तो आपका nth डिग्री अप्रोक्सीमेशन हो गया, पॉलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन, एंड बिकॉज दिस इज माय फंक्शन and I'm equating it and this is not approximate, so I will have to add a remainder value n plus 1x, right? This is my remainder value. ठीक है जी, और मेरी रिमाइंडर वैल्यू क्या होगी? इट विल कीप फॉलोइंग द सेम पैटर्न, सो वी विल हैव टू डू f ऑफ n प्लस 1x, और वहां पे x के जगह वी विल पुट c, राइट? सो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, सो योर r ऑफ n प्लस 1x विल बी व्हाट? इट विल बी m इंटू m माइनस 1, और ये चलता जाएगा बिकॉज हियर यू विल हैव f n प्लस 1, सो आप जो सब्ट्रैक्ट करोगे वो क्या होगा? n, सो m minus n. Okay, that's what you do, divided by n plus 1 factorial. Okay, and then you will have x minus a, so x minus a is 0, so x raised to the power n plus 1. ठीक है, so अब यहाँ पे x raised to the power n plus 1, that is the first thing. लेकिन एक चीज और ध्यान रखनी है, यू सी, हम लोग यहाँ पे 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n, 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर m माइनस 1, 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर m माइनस 2. Okay guys, I think I made a mistake here. It should be this. It should not be 1 plus x raised to the power n, it should be 1 plus x raised to the power m minus n. यहाँ पे पावर ही होगी, so जो आपका f n plus 1 x है, that should also be what? m into m minus 1 and all of that, जो भी multiplication needed, and 1 plus x raised to the power m में से n plus 1 minus करना है. ठीक है, so this is what remains. So जब भी आप 0 पे वैल्यू निकाल रहे थे, whenever you were finding values at 0, this was getting vanished, right? So ये 1 हो रहा था, but यहाँ पे जब आप रिमाइंडर निकालोगे, you will not use x equals to 0, you will be using c value, because that's what we used to do. So यहाँ पे आपको c value put करनी है. So ये वाला जो expression है, this will not vanish. So we will have 1 plus c raised to the power m minus n plus 1. So we will have what? This particular expression, 1 plus c and then m minus n plus 1. This is what we will have. I know this looks a little complicated, but once you get into the groove of it, once you try to write everything up while I am also doing it, things will be a little bit easier. Okay, all right, so this is basically your remainder value. Okay, अब ये वैसे भी बहुत बड़ा expression लग रहा है, and why is that happening? Because ये सारे multiplication और ये सब हम लोग लिख रहे हैं. What if there is a more compact way of doing it? ठीक है, so ये जो है, I can see there is a pattern which is being followed here. यहाँ पे m, यहाँ पे 1 factorial, यहाँ पे 2 numbers 2 factorial, n numbers n factorial, and there is a pattern. यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन सिर्फ 1 तक हो रहा है, यहाँ पे n है तो सब्ट्रैक्शन सिर्फ उसके एक पहले तक हो रहा है, राइट? यहाँ पे n plus 1 है तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन सिर्फ उससे एक नंबर पहले तक हो रहा है, राइट? सो दैट इज द पैटर्न दैट वी हैव. सो अगर मैं ट्राई करूं एक तरीके से डिफाइन करना, मान लो, सो दिस इज हाउ आई डिफाइन एम के. सो मान लो कि मैं ये जो एक सिंबल है, दिस इज अ सिंबल विच मीन्स व्हाट? आई एम गोइंग टू डिफाइन इट नाउ. So if this is a symbol, it means m into m minus 1. So अगर ये जो symbol है, इसका मतलब क्या है कि आप m को मल्टीप्लाई करते रहो इसके पिछले नंबर से टिल आप इसमें से k माइनस ना कर लो. k में से k माइनस तो आपको करना है, बट लाइक k से पहले, k से जो नेक्स्ट बड़ा नंबर है सिर्फ वहीं तक आपको सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक है, सो okay, so let's say let's just take a concrete example. ठीक है, so for example मान लो you do 3 2. इसका मतलब क्या होना चाहिए
कि आपने क्या किया 3 इंटू फिर 3 में से क्या माइनस किया 1, ठीक है, एंड इंटू फिर 3 में से क्या माइनस किया आपने 3 माइनस, अब यहाँ पे 2 आ गया, बट 2 आपको सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, ठीक है। सो जो 2 है उससे जो छोटी वैल्यू बच गई सिर्फ वहीं तक सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। सो इट इज दिस एंड देन यू जस्ट डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है। दिस इज व्हाट दिस एक्सप्रेशन इज। सो एम के, ये जो एक्सप्रेशन है इसका मतलब क्या है, यू डू एम इंटू एम माइनस 1 इंटू एम माइनस 2, ऐसे चलते जाओ टिल के तक नहीं पहुंचना है, के से एक कम ही सब्ट्रैक्शन रखना है, ठीक है। सो एम माइनस के माइनस 1, के माइनस 1 से एक कम ही सब्ट्रैक्शन रखना है, एंड देन यू जस्ट डिवाइडेड बाय के फैक्टोरियल, okay. So let's say I do 5c2, not c2, like this symbol. So that means what, 5 into 4 into, okay, let me not write like that, 5 into 5 minus 1, okay, and then you don't have to do 5 minus 2, क्योंकि ये जो k वैल्यू है वो आपको सब्ट्रैक्ट नहीं करनी, k से एक कम वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है, ठीक है। इफ दिस वुड हैव बीन 3, if this would have been 3, तो आपको क्या करना था 5 5 minus 1 5 minus 2, बस 5 minus 3 नहीं करना है, ठीक है, and then divided by 3 factorial. So if like this symbol means this, कि जो भी आपका k नंबर है आप उसमें m में से वो नंबर सब्ट्रैक्ट करते रहो till you are at one value which is something which is 1 less than k. So k minus 1 सिर्फ आपको सब्ट्रैक्ट करना है, and whatever this number is you just do a factorial here, ठीक है। That is what this symbol means. Why are we doing this? Because you know it'll simplify this entire big way of writing things, ठीक है। So you see यहाँ पे you have m, यहाँ पे you have m, यहाँ पे आपने सिर्फ 1 तक सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, तो what should you have here, m2, यहाँ पे आपने सिर्फ n minus 1 तक सब्ट्रैक्ट किया है, so what is the next number, the next number is n, so what you should have mn, this is what you should have. So it makes our life a little bit easier, right? Because if I try to apply the same notation here, what do I get, this is m1, क्योंकि मैंने m में से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं किया, राइट। या फिर आप सिंपली ऐसे भी देख सकते हो, whatever is this factorial number just put it right here. This is nothing but m2, this is nothing but m and n, this is nothing but m and n plus 1. So मैं ये पूरा expression लिखने के बजाय I can just write these and it'll make my life simpler, okay. So going by that logic, okay, so that is there's one more thing that I want to clarify, which is this m does not need to be an integer. So like I have used 5 here, 3 here, you know, it could be 1 by 2 also, it could be negative number also. So if you do, you know, 1 by 2 3, what do you get? So you have to do 1 by 2, that is the first thing. फिर 1 by 2 में से आप क्या subtract करो 1, फिर आप 1 by 2 में से क्या subtract करो 2, and then just stop right there. 3 subtract नहीं करना है, and then just divided by 3 factorial. This is what this symbol means, ठीक है। अभी तक आपने you know n choose k n choose c ये सब जो expression सुना हुआ है, this is only valid you know for integer values, but this particular symbol is applicable generally and this is what it means, okay. So I hope it makes sense now. All right, so now it's all fine, we've all everything under control, all सारे symbols हमें समझ में आ गए, अब बस मुझे ये expression को लिखना है, that's it, okay. So now if I have to use the Taylor's formula here, 1 plus x raised to the power m, अगर मुझे इसको लिखना है तो मैं क्या करूंगी, about a equals to 0, so 1, and then I'll use this symbol and x, this symbol and x square, and this symbol and x power n, and this symbol and you know this entire thing, that's it, okay. So let me write it. So I will get what, 1 plus m1x plus m2 x square, I'll keep going till I reach what, mn x power n,
एंड देन आई विल हैव अ रिमाइंडर टर्म, एंड मेरी जो रिमाइंडर टर्म है वो क्या होगी, m n+1 x raised to the power n+1, and then just one thing which did not vanish, so this is m में से आप क्या subtract कर रहे हो, n+1. so that is what I get here. और ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये कहाँ से आया है, ये आया है यहाँ से, जो वैनिश नहीं हुआ था, क्योंकि यहाँ पे मैंने 0 नहीं पुट किया था, मैंने यहाँ पे c पुट किया था. ओके, so this is your Taylor's formula when you have a specific type of function which is this. Okay, so this is like a compact version of this big formula. So इसको आप directly भी apply कर सकते हो, ठीक है, you can apply this directly also. So and one more thing, ये जो c है आपका, c value again lies between a and x. What was the a that we were talking about here? So c lies between, it lies between 0 and x. Okay, so that is something that we have to keep in mind. So जब भी upper bound और upper bound हमें निकालना है, so we'll have to see कि x value क्या है, तो किस value के लिए मेरे को upper bound मिलने वाला है, ठीक है. So let me just give you a question, and I would love to know the answer from you guys. This lecture is getting very, very long, so let me tell you one. So if your question is, I give you 1.1 raised to the power 1/3. Okay, you have to compute this particular, for this particular expression, you have to find the Taylor's formula till n equals to 2. So you have to do a quadratic approximation and also find the remainder value. Okay, and tell me what is the upper bound that you find. Find an upper bound. Okay, so let me just give you a hint. How will you go about it? So you see this number, आपको ये जो expression है इसको Taylor's formula का use करके expand करना है, and then you also have an upper bound for the remainder. Okay, that's what you have to do. So I can see that this is nothing but 1 plus 0.1 raised to the power 1/3, right? So does it resemble this? Okay, does it resemble this? So you see your m value is 1/3, right? What is your x value? 0.1. Okay, and you have to do this approximation around x equals to 0, right? Because x की value close to 0 hai. You can try taking a equals to 0 here. Okay, and then do this entire thing. Okay, so once you do that, then because you have to do it for n equals to 2, so just do this, and here you will have a power 3. Okay, so this is the expression that you get. You have your m value, you have your x value, you basically have everything, right? So you find the polynomial approximation and then find the remainder, and tell me what is your upper bound for the remainder value. Like remainder value की maximum value क्या हो सकती है? Just keep in mind that your c value should be lying between what? C value should lie between 0 and 0.1 because your x value is 0.1. So आपकी c value जो है between these two numbers should be there. So tell me what is the upper bound and how will you write this entire expression. So once you tell me the upper bound, I'll know whether you've done it correctly or not. Okay, so that is your homework. I hope you were able to understand this. I know this is a very this turned out to be a very detailed lecture, but we needed to do that. Otherwise, you will not be able to understand it, and it would have felt ki bas, you're just mugging up the formula and not understanding it. So thank you so much. If you were able to understand it, please consider subscribing to my channel, hit the like button, share it with your friends. I know your exams are very, very soon. I'm trying my best to upload as much as possible. Wishing you all the very best. I'll see you in my next lecture, which will be on the L'Hopital's rule, and then we'll do the inverse function, inverse theorem. So that will be the agenda for the next lectures. So thank you so much and take care.